today's session. We have our amazing speaker, Vishaka Mataji, to share about today's topic, that is one God or many gods. And when I say amazing, I mean it. So let's hear it from her. Over to you, Mataji. Thank you, Charmi. Welcome, everyone. And thank you for your enthusiasm and your interest in the most important subject matter. And I can promise you a very interesting session today. There are many new things that you will learn today. So without wasting any more time, I'm going to share my screen, and here we go. So we'll just invoke prayers to our Guru Parampara. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhavitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bibi Govind Swami Niti Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedant Swami Niti Namini. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Desh Tarini. So in the last session, what did we do? Anyone? You can write in the chat box. Please keep yourself muted. What did we cover in the last session? What was the topic that we did? Does God exist? Yes, that's right. And we established that yes, God exists without a doubt. And naturally, the next question is, but who is God? We see so many gods around us. There are so many people claiming to be God. There are so many organizations claiming that they are in charge of God, or they are the ones who know who is God. So what do we do? And we also did last time that there are three ways to get any kind of information: Pratyaksh Praman, Anuman Praman, and Shabd Praman. And we also saw scientifically that Shabd Praman is our best bet because it is above cheating and it is above mental speculation. So relying on the same Shabd Praman, let us see the answer to this question, whether it is one God or many gods. So these are the four areas that we will cover. Why are there so many scriptures? Quran, Bible, Torah, 10 Commandments, Bhagavad Gita, so many Vedas. Why so many scriptures? And then next we will see if there is one God or many gods. Also, is God personal or impersonal? Matlab, does he have a form or he does not have a form? And if he has a form, who is he? Who is God? और अगर भगवान है, तो फिर ये देवी देवता कौन है? These are the four things that we are going to cover today. So if there is one creator, then there should be one manual, right? Like we saw in the last session. तो फिर इतने सारे manuals, इतने सारे scriptures और इतने सारे religions क्यों हैं? अगर एक ही भगवान है, God is only one. All the religions say this. भगवान एक है, सबका मालिक एक है ना, लिखा हुआ होता है हर जगह पे. तो फिर एक ही मैनुअल भी होना चाहिए.
So let us just see a history. There is one religion or scripture. नीचे से शुरू करते हैं. इस्लाम 1300 साल पहले आया है ना, 1500 साल अब लगा लीजिए. So Islam is fairly recent. It is the most recent religion. उससे पहले just 500 years back was Christianity. 2000 साल हुए Christianity को दुनिया में आते हुए. तभी हमारा जो number system है, that is AD, after death. हमारी जो डेट कैलेंडर है वो क्राइस्ट के बाद ही बना, आफ्टर डेथ. एडी का मतलब है आफ्टर डेथ. तो उनके डेथ को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, और उसके बाद हम आफ्टर डेथ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स काउंट करते हैं, और उस तरह से हम 21st सेंचुरी में हैं अभी. और क्राइस्ट से पहले उसको हम बीसी बोलते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब हमें पता ही नहीं है उससे पहले सृष्टि कब से शुरू हुई. So Christianity is what? Only 2000 years old. So हमारा numbering system सब कुछ सिर्फ 2000 साल पुराना है. But Christianity से भी पहले Buddhism आया. There are recorded facts for these things. So Buddhism is what? 2500 years old. But the Bhagavad Gita was spoken to Arjun 5000 years back. So Sanatan Dharam actually is the beginning. It is the start point of all information, spiritual information for entire mankind, for the entire world. And everything came subsequently after that. So you can consider Buddhism, Christianity, Islam as all subsets of Sanatan Dharam. In fact, all the European creators, innovators, scientists relied on Vedic information. You know, even Einstein said that he got the idea of searching for an atom after reading about Anu in Bhagavad Gita. That gave him an idea to look into that direction on what is the smallest particle in the universe today. So there is one religion and there is one scripture, but it is given according to the different audiences as the time grows by, and also according to TPC, time, place, and circumstance. Why? Why is that? So let's see. There is only one scripture, and it is given according to different audiences. Why? Because of the ability to digest information. जैसा आपका audience होगा, आपको उसी तरह से information देनी पड़ेगी ताकि वो उसे पचा पाए, उसे समझ पाए. To avoid rejection, you know, so that they are sitting there and listening if you have to really tell them what is good for them. And also, advancement is always step by step, gradual. So because of this triple A, जितने भी from time to time जैसे authentic spiritual masters and gurus and acharyas came into this world, they kept these three things in mind: the time, place, and circumstances, and the ability to digest, ability of the audience to digest, to avoid rejection, and advancement step by step. For example, ये छोटा बच्चा है जो supposing kindergarten में जा रहा है अभी, या Montessori में जा रहा है, तो उसको अगर हम पूछेंगे 2 - 5 क्या है, he will laugh, saying ये तो क्वेश्चन ही गलत है, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता. 2 ही मेरे पास टॉफीज हैं, मैम ने बताया है, 2 टॉफीज में से मैं 5 टॉफीज कैसे निकाल सकता हूँ, है ना. सो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही वहां तक है. he will find this question wrong. लेकिन आप इसी क्वेश्चन को अगर मिडिल स्कूल में पूछोगे to this next boy shown here, he will immediately say -3, क्योंकि he is already advanced now, he has matured further in his knowledge and information. So उसको ये क्वेश्चन गलत नहीं लगेगा. Not only that, वो इसका जवाब भी दे पाएगा. और उसी तरह अगर आप इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देखोगे, he will be talking about cos theta, sin theta, trigonometry, और उसकी मैथ्स को देखकर ये बाकी तो हंस रहे होंगे कि ये तो ABCD पढ़ रहा है और अपने आप को ऐसे बता रहा है जैसे इसको एडवांस मैथ्स आता है. You know, this looks like B to me and A to me. So, you know, the logic of an elementary child or a high school child or a college child, the logic is different. Hence, जैसी आपकी ऑडियंस है उस हिसाब से ही आपको उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी. और ये this intelligence all our acharyas had, even our scriptures had this intelligence. Vyasadeva already had this intelligence. So one medicine cannot be administered to all, क्योंकि सबकी intelligence level, understanding level is different. So you will see one thing in common, that there are similarities in religions and scriptures. For example, ईसा मसीह, Jesus Christ जब आए, उनका क्या मैसेज था? Love thy God
with all thy heart and soul. भगवान से प्यार करें, प्रेम करें with all your heart and soul. And he also said, O Jesus, hallowed be thy name. मतलब आपका नाम का गुणगान हो, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, नाम का गुणगान कर रहे हैं होली बाइबल में. उसी तरह इन द कुरान, इस्लाम का मीनिंग है कंप्लीट सरेंडर. So there are 99 names of Allah in Quran. मतलब and they are supposed to chant these 99 names of Allah. So नाम के जाप के ऊपर कुरान में भी बहुत स्ट्रेस है. और उसी तरह भगवत गीता में तो ऑलरेडी कृष्ण इज डिक्लेयरिंग सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आइए और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए. इति षोड़ शतम नाम नाम कली कलमश नाशनम, ब्रह्मा जी लिख रहे हैं इन ब्रह्म संहिता कि ये जो 16 अक्षर का इति षोड़ शतम नाम नाम, 16 अक्षरों का जो मंत्र है, कली कलमश नाशनम, कलयुग में हर कलेश को नाश करेगा. इसको निरंतर इसको जपें, हरे कृष्ण महामंत्र को जपें. So you can see that in all religions, what is common is the essential principle is the same. What is that? That God is one, और हम सब उनके बच्चे हैं, we are his children. Similarly, हमें ये relationship दोबारा से establish करनी है. उसके लिए there are some rules and regulations that we have to follow. There are some do's, there are some don'ts. हर religion में there are do's and don'ts. There is a regulation, there is a balance. You cannot do whatever you want, however you want, wherever you want, with whomever you want. That is animalistic. Then you will live like an animal and you will also get pleasure and pain like an animal. But if you don't want that, then you have to have a moderate or guided, balanced lifestyle. And lastly, realization of that relationship. मतलब पहले तो आप स्थापित करें कि there is a Bhagwan, then you develop a relationship with him, and then when you realize, when that relationship grows stronger, you develop love for that person. So why are there so many differences then? Okay, so let's take a look at that. The differences are, जैसे बाइबल में Jesus says in one place, ye men of less faith, I have a lot to tell you, but you cannot understand it now. So Jesus knew the level of his audience. He knew how much they can digest what he has to tell them about Vedic information. So he told them that your faith is not enough right now. You have less faith and I have a lot to tell you, but वो आप इस समय समझ नहीं पाएंगे. So he told them the basic, that which they could understand. Similarly, in the Quran, in the 4th surah, it is mentioned, thou shall not have sex with your mother and sisters. This is just to give you an idea कि किस तरह की ऑडियंस के साथ डील कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको इतनी बेसिक चीज बतानी पड़ रही थी. तो उनके पास कहाँ कैपेसिटी होती टू अंडरस्टैंड द हायर साइंस ऑफ अ सोल, अबाउट कर्मा, अबाउट रीइंकार्नेशन. दे डिड नॉट इवन हैव द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दिस. उनको तो अभी एनिमल लेवल से ह्यूमन लेवल तक ही लाने की कोशिश कर रहे थे. एंड देन इन द भगवद गीता, Krishna says that I am giving you complete knowledge beyond which there is nothing more to be known. So he declares that Bhagavad Gita is the sum total of all knowledge or information that is available in the entire universe. And beyond this, there is nothing that you need to know, or there is nothing that ever exists. It contains everything. So this means that there are two types. एक तो pocket dictionary होती है जिसमें main words covered होते हैं, but it does not contain everything because it's a pocket dictionary. It is for ease of carrying, ease of convenience. You can carry it all around. But जो भी उसमें missing है, और अगर आप you come across some such words जो pocket dictionary में नहीं है, वो आपको Chambers dictionary में जाके लेने पड़ेंगे. You'll have to go to a bigger library. You will have to delve into the encyclopedia. And that Chambers dictionary is Sanatan Dharma. So whatever you cannot understand or whatever you are ambiguous about, you will find it in the Sanatan Dharma scriptures or in the Vedic scriptures, because it is the sum total of everything. And you can consider the other religions as the pocket dictionaries. They have some parts of the Chamber dictionary because their prophets are trying to give it according to the intelligence of their audience.
So there are different levels of worship. Why? Because there are different levels of relationships. Most of the people follow dharma because of fear. अगर नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा या कुछ हो ना जाए, क्या पता कुछ बुरा हो जाए, so let's just follow. So most of the people follow religious principles or religious scriptures for out of fear. And higher than them are those who follow religion or religious scriptures because they want their daily bread to continue. यहाँ तक कि I have studied in a convent school and I remember हमें ये prayer बुलवाई जाती थी. Nuns थे उस समय, Christian missionaries द्वारा स्कूल था, वो हमें ये बुलवाते थे, Oh God, give us today our daily bread. मतलब जैसे भगवान हमारा ब्रेड सप्लायर है, तो उसको डेली पूजा करनी है कि हमारी आज की ब्रेड हमें जरूर दे देना. सो दूसरा लेवल ये है, इस तरह के लोग हैं जो उनको डिजायर करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं. तीसरे उस जो ड्यूटी बाउंड है, ड्यूटी बद्ध है, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, अरे चलता चला आ रहा है, ये प्रथा चली आ रही है, पिछले 10 जनरेशन से हमारी फैमिली में हमें ये बताया गया है वहां जाकर पानी चढ़ाना है, वहां जाकर पितरों को ये दान करना है. सो आउट ऑफ ड्यूटी दे आर डूइंग इट. दे मे नॉट नेसेसरली बिलीव इन इट, बट दे आर सो ड्यूटी बाउंड दैट दे आर डूइंग इट. And finally, the highest type of worship is unmotivated and uninterrupted. Ahaituki apratihata. So you can see that love of Godhead automatically contains all the three: fear, desire, and duty. So it is the highest kind of worship, whereas the others may or may not contain love of Godhead. And the two scriptures we talk only about pure love are Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita is the basic, the preliminary study of who you are, who is God, what is the relationship between the two of you, and how can you develop that relationship. That information you get from Bhagavad Gita. And the Srimad Bhagavatam is the advanced study after that teaches you how to develop love of God, how to develop a loving relationship with him, how to know him, who is God, how it gives you more information about his leelas, about what he does, how does he look, what does he do. And these are the only two scriptures that talk about love of God. All the other scriptures are talking about fear, desire, or duty. So this is the highest. So we've done scriptures now. क्यों अलग अलग तरह के scriptures हैं, क्यों अलग अलग तरह के words, myths हैं दुनिया में. Now let's see one God. Is God personal or impersonal? आप लोगों का क्या मानना है? Is God personal or impersonal? You can write in the chat box quickly. Or maybe I'll ask that question later. Let's take a look at this. This is a sun. इसे सन भी कहा जाता है, सूरज भी कहा जाता है, भास्कर भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है और सूर्य भी कहा जाता है. मतलब एंटिटी एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है. इसी तरह से there is only one God, but he may be having different names. Some call him Bhagwan. Bhag मतलब opulences and Van मतलब इन opulences को धारण करने वाले. So भगवान, परम आत्मा, हम सबके अंदर आत्मा है, लेकिन इन आत्माओं के ऊपर जो परमात्मा है उसको हम परमा सुपर सोल बोलेंगे. अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल. ये भगवान की क्वालिटीज के ऊपर नाम पड़े हुए हैं. अल्लाह का मतलब है ऑल पावरफुल. जेहोवा, जो ज्यूज हैं, दे कॉल हिम एज जेहोवा. उसका मीनिंग क्या है? ही इज ऑल मर्सीफुल. राम मतलब ही इज द reservoir of all pleasure. And Krishna means all attractive, the sum total of all beauty and all qualities and all power means Krishna. So it's the same God, but he's called by different names. Same creator, lekin naam alag alag hai. Similarly, all religions have the same essence. There is actually no conflict agar dekha jaye to. सबका मैसेज एक है. ये बाइबल में जैसे कुछ पंक्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं. लव दाई लॉर्ड विद ऑल दाई हार्ट एंड सोल. लव के ऊपर स्ट्रेस है कि भगवान से प्रेम करें, पूजा करें नहीं लिखा हुआ है ना, रिचुअल्स करें नहीं लिखा हुआ, प्रेम करें. गो बैक टू द किंगडम ऑफ गॉड मतलब दिस इज रिटन इन द बाइबल. गो बैक मीन्स दिस इज नॉट योर रियल होम.
Go back means you have a real home. There is a kingdom from where you have come, and go back to that kingdom of God. We are all the children of God. Surrender to the will of the Lord. Chant the holy names of the Lord. All the scriptures have given a stress on chanting the holy names. चाहे वो अल्लाह का नाम हो, चाहे जेहोवा का नाम हो, चाहे वाहे गुरु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो. So what is the conclusion? भगवान एक है, नाम अलग अलग है, सभी scriptures का message भी एक ही है. Develop a relationship with God and a loving relationship with God. And how can that be developed? By chanting his name. तभी आपने देखा होगा मुसलमानों के हाथ में भी तस्वीर होती है जिसपे वो अल्लाह के 99 नाम जपते रहते हैं. जो क्रिश्चियंस हैं उनके हाथ में भी रोजरी होती है जिसमें वो जेहोवा या जीसस के नाम जपते रहते हैं. और हिंदू कल्चर में तो माला है ही है जिसमें वो कृष्ण के अलग अलग नाम जपते रहते हैं 108 मन को. So it's common between all the religions. Now coming to the question that I asked you earlier, भगवान पर्सनल है या इम्पर्सनल है? मतलब उनका फॉर्म है या वो फॉर्मलेस है? Okay, Yojana says he's impersonal. Any other? Top 3 I will take before I move on. Quickly, we don't have much time. Does God have a form or he does not have a form? All right, let's see what the scriptures say. For example, this is the sun. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सूरज दिख रहा है. So form is the sun. और जो sunshine है, जो यहाँ पे आपको इतनी light दिख रही है, and there is heat also here. All these are because of the sun. अगर sun को निकाल देंगे, sunshine निकल जाएगी, right? Can there be sunshine without the sun? No. So this means जो formless form आपको दिख रहा है, जो आपको sunshine और heat दिख रही है, that is somebody speaking? Is somebody? Can you mute them, please? I did, Vandita. All right. So sunshine sun की वजह से है. This means कि अगर आपको लगता है कि God is formless, there is nothing but just nature, then nature also has come from some form, some source. If there is light everywhere and we can see everything, then there has to be the source of that light as well. So there is a form and there is a formless. Both exist together. For example, again, these are from the various biblical instances. Genesis में लिखा है the eyes of the Lord. Exodus में लिखा है we also read under his feet. Exodus 31 में लिखा है inscribed with the finger of God. So ये अगर भगवान formless है, अगर भगवान केवल एक light है, why do they write eyes of the Lord under his feet with the finger of God? In fact, Bible Azaliel describes God as saying the semblance of a human form. Bible में ये भी लिखा है that man was made in the image of God. मतलब हमें जो रूप रेखा मिली है, this is a reflection of how God looks. This is mentioned in the Bible. Why? Why is it written this way if God is shapeless, formless? Similarly, the ears of the Lord is written. In Genesis chapter 18 and 19, God appeared before Abraham. Here God appeared in a human-like form, although form is not elaborately described. So, Radha Govind Maharaj को एक बार एक airport पे वो जा रहे थे, तो one Muslim saw him, he's wearing saffron. He approached him. And he said, आप लोग मूर्ति पूजा करते हो, हमारे तो बिल्कुल कुरान में लिखा है कि Allah is just a light. He does not have any shape and form. So आप लोग काफिर हो, आप ये बिल्कुल गलत फॉलो कर रहे हो. तो महाराज ने बड़े प्रेम से उसको जवाब दिया, उससे पूछा, अच्छा आप लोग कैसे पूजा करते हैं बताइए, किस तरह से करते हैं? कहते हैं अरे हम नमाज पढ़ते हैं, हम जाते हैं. सर अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं, तो कैसे आपको पता है कि ये पहुंच रहा है उन तक? कहते हैं अरे हम जब ऊंचा बोलते हैं तो वो सुनते हैं. कहते हैं अच्छा वो सुनते हैं, तो कैसे सुनते होंगे? कहते हैं कानों से सुनते हैं. कहते अच्छा अगर कान है तो फिर आंख भी होगी, अगर आंखें हैं
तो फिर मुंह भी होगा, कुछ बोलते भी होंगे। तो वो बिल्कुल ही वाज स्पीचलेस, उसका इसके पास कोई दलील नहीं थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ही वाज कंप्लीटली टेकन अबैक। से जिस तरह से आप, हम सब प्रार्थना करते हैं और आप, हम सबको पता है कि वो सुन रहे हैं, तो अगर वो सुन रहे हैं इसका मतलब ही हैज सम पर्सनालिटी, ही हैज ईयर्स टू हियर, तभी तो वो सुन पा रहे हैं। और आपको पूरा फेथ है कि आपकी बात उन तक पहुंच रही है। सो व्हाई वुड यू डिनाई दैट ही डज नॉट हैव अ फॉर्म? दिस इज वेरी लॉजिकल, है ना? सिमिलरली इन कुरान ही ऑल्सो सेज अल्लाह's फेस, वजह 55 में लिखा है, अल्लाह's आईज, यहां तक डिस्क्रिप्शन है। एंड येट यू से दैट अल्लाह इज नॉट अ पर्सन। सो इट क्लियरली शोज, अगर आप केवल स्क्रिप्चर्स को जाएं, इनकी मिस इंटरप्रिटेशन पे ना जाएं, ऑल द स्क्रिप्चर्स, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो टोरा है, चाहे वो भगवत गीता है, it clearly shows that the Supreme Lord is a person. हाँ, उनकी शरीर से आभा निकलती है, उनकी शरीर से इतनी तेज निकलता है जिसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति ब्रह्म से आ रही है। आप ये नहीं मान सकते, ऐसा नहीं कह सकते केवल ब्रह्म ज्योति है, उसका सोर्स कुछ नहीं है। That doesn't sound very logical. तो इसीलिए ब्रह्मा कहते हैं, व्हाट इज आवर कंक्लूजन, कि भगवान दोनों है। ही इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल बोथ, क्योंकि फॉर्मलेस का सोर्स फॉर्म होता है। लाइट किसी सोर्स से आती है, बिना सोर्स से लाइट नहीं हो सकती, है ना? सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड द टॉप टू स्क्रिप्चर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस बोले जाते हैं। भगवान दोनों है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ओके, सो व्हेन वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, नाउ लेट्स कम टू भगवान कौन है, हु इज गॉड। सो वी आर शोइंग यू सम पिक्चर्स हियर, इन्हें ध्यान से देखिए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? What do you feel about these pictures? ये कौन है? इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Krishna fits into the definition of God. Specs लगाए थे हमने पिछले सेशन में. What was the spec? Who is God? He who is the supreme. What is the definition of God? He who is the supreme source of everything, the supreme proprietor, matlab supreme owner of everything, the supreme enjoyer and the supreme controller. Supreme matlab वो किसी पे dependent नहीं है, लेकिन उन पे सब कुछ dependent है. He controls everything, nobody controls him. He enjoys everything, his enjoyment does not depend on anyone else. He owns everything और सब कुछ उन्हीं से आ रहा है. व्यासदेव के जो पिता हैं पराशर मुनि, उन्होंने इनका भगवान की डेफिनेशन दी है, where he says ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, मतलब ये 6 opulences जिनमें हैं वो भगवान कहलाने के हकदार हैं, जिनमें ये 6 opulences हो. भगवत गीता 10.8 में तो कृष्ण डायरेक्टली सेज अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते. I am the source of not only the spiritual worlds, but even the material worlds, and everything comes from me. No one has made this statement in any scripture. No one says that I am the source of everything. इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को बता रहे हैं. In the first verse of the 5th chapter, he says, Ishwarah Paramah Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. Krishna, who is known as Govind, is the supreme. He has an eternal, blissful spiritual body. Sat Chit Anand से उनका शरीर बना है, हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है. He is the origin of all. लेकिन he is आदि पुरुष, अनादिर आदिर गोविंद, मतलब उनका ओरिजिन कोई नहीं है, उन्हीं से लाइन शुरू होती है. And he is on top of the line. And he is the prime, sarva karana karanam. He is the cause of all causes. This is the definition of God. और भगवान के 6 opulences हैं. क्या opulences हैं? जैसे पराशर मुनि ने बताया, इन विष्णु पुराण बताते हैं ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, he who is supreme or the who has the most aishwarya. For example, Dhirubhai Ambani, ठीक है आप कह सकते हो that Ambanis are very rich or they are very powerful, but are they supreme powerful? Well, here look at this.
हम सब लक्ष्मी पूजन करते हैं. All of us are crazy after Lakshmi Puja because we know she is the goddess of health, wealth. And what is she doing here? The goddess of wealth is in the feet of Lord Vishnu. मतलब Vishnu is Lakshmipati. ऐसे करोड़ों goddesses of wealth हैं जो विष्णु की सेवा में है निरंतर. मतलब he is the source. In fact, Vishnu was able to give birth to Brahma even without the help of goddess Lakshmi. He did not need any female counterpart to produce Brahma or to produce all the jivas. They just came out of his navel. He had all the ingredients himself. He depends on no one to produce anyone. वो स्वयं अपने अंश से ही किसी को भी उत्पन्न कर सकते हैं. So he can be called, the supreme wealthiest person because all the goddesses of fortune belong to him. Similarly, Samagrasya Veerasya. Yes, this person may be the Olympic winner for strength, maybe all over the world. He may be world number 1, but can you beat this 7-year-old boy who held a huge mountain on his left hand with a little finger? And he held it for 7 days, 7 nights without sleeping, eating, or drinking, and playfully, as if it's a toy. और not only that, जो पूरा गांव था, भेड़ थी, उसमें animals, children, all of them, किसी को न भूख लगी न प्यास लगी for the entire duration of those 7 days and 7 nights. ना किसी को नींद आई. And everybody just kept looking at him. This is an example of supreme strength. There is nothing to match this in the history of the entire world. So Aishwarasya Samagrasya Veerasya Yashasaha. He may be the most powerful man of the world. He was, okay. America is considered the most powerful nation and the president of America is the most powerful person. Well, yes, currently or maybe of this world, but Krishna is famous in all the galaxies and all the universes. Currently, right now, as we speak, किसी न किसी यूनिवर्स, हर यूनिवर्स में इस वक्त कृष्ण का गुणगान किया जा रहा है. हम तो सिर्फ इस भूलोक की बात कर रहे हैं, बट शास्त्र बताते हैं that in all the universes, spiritual and material, people are only discussing him, only talking about him, only wanting to know more and more about him, and his leelas are being discussed. Nitya leelas. Similarly, Yasashah Shriyah. Shriyah means beauty. So yes, there may be Miss Worlds, Miss Universes of this material world, but it's mentioned in the Shastra that Kamadev, matlab Cupid, he gets attracted by Krishna. खुद कामदेव कृष्ण पे मोहित हो जाते हैं. मतलब उनके जो बाण है वो फेल हो जाते हैं इनके आगे, वो ही इनकी लपेट में आ जाते हैं. He gets so attracted by the beauty of Krishna that he forgets his power. He becomes powerless. All knowledge, Shriyah, Jnanah, Aishwarasya Samagrasya Veerasya Yashasah Shriyah, Jnanah. We all know about Shakuntala. Yes, she had an extraordinary memory. This is one of the opulence. But Krishna is called, he has the perfect or the complete knowledge. आप सब जो भी गाड़ी चला रहे हैं आज, do you think you will be running the same car 10 years from now? No. हम अपनी cars को update करते हैं, हम अपने mobiles को update करते हैं. हम सभी almost all technological advanced चीजें जो हमारे पास हैं इस वक्त knowledge को, Google अपने आप को बार बार update कर रहा है ना, हमें updates भेजता रहता है. But Krishna never needed to update the blueprint of the human body. करोड़ों साल से इंसान बन रहे हैं, आज भी वही 2 कान 2 नाक. कृष्ण को जरूरत नहीं लगी कि ओह मैंने पिछली बार गलती कर दी थी, अब मैं अपग्रेड करके इनको जरा 3 आंखें दे देता हूँ, 4 कान दे देता हूँ, शायद 2 हाथ मैंने गलत लगाए थे या 4 5 6 हाथ दे देता हूँ. Nothing, it was perfect. His knowledge of creation is perfect. Nothing needs to be updated. Everything is going on exactly the same way as he created millions of years before. This is called perfect knowledge. There is no correction needed. पूरी भगवत गीता का सार उन्होंने केवल 1 घंटे में दे दिया अर्जुन को, और अर्जुन भी उसे 1 घंटे के अंदर ही समझ गया. हम लाइफ टाइम्स लगा देते हैं, एटलीस्ट ये इस लाइफ में तो 6 7 8 बार भगवत गीता पढ़ने पर तब जाके हमें इसका समझ आए.
बट ही जस्ट स्पोक इट इन एन आवर, वो भी बैटलफील्ड में, इतनी टेंस सिचुएशन में जहां पे विश्व युद्ध शुरू हो रहा है. दिस इज कॉल्ड सुप्रीम नॉलेज. रिनाउंसिएशन, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ, यू कैन से दैट इतना पॉलिटिकली पावरफुल पोजीशन में थे लेकिन फिर भी बहुत रिनाउंस थे. वैराग्यात, but who can compare with Krishna, the father of the universe, the owner of the entire universe. आप में से कोई भी कभी imagine कर सकता है that you own everything और आप अपने नौकर बन जाओ? मतलब as the king of the world, as the king of the universe, he agreed to become the servant or the driver of Arjun, जिसको वो खुद अभी समझा रहे हैं. अर्जुन उनको गुरु मान रहा है, अर्जुन इज कंफ्यूज्ड, वो उनसे गाइडेंस मांग रहा है, और ये willingly, he is so renounced, he is not attached to his position, to his power, to his the position that he holds. He's so renounced that he can take this position. None of us can do this, none of us. हम अपने बच्चों के साथ भी ये नहीं कर सकते, but he, and कि कैसे रथवान क्या होता है. It's not simply के ये ड्राइवर बन गए. एक तो जो ड्राइवर होता है रथ का, उसकी सीट नीचे होती है, और जो चालक होता है, अर्जुन की सीट ऊपर थी. और अर्जुन, क्योंकि स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं जब आप युद्ध कर रहे हो, तो बोलने का टाइम नहीं होता, लेफ्ट मोड़ो राइट मोड़ो. तो जो रथवान होता है वो ड्राइवर के कंधों पे अपने पैर रख देता है. तो जब उसको लेफ्ट मोड़ना होता है तो वो अपना लेफ्ट पैर दबाता है, तो ड्राइवर समझ जाता है मुझे लेफ्ट मुड़ना है. अगर उसको राइट मुड़ना होता है, राइट पैर दबाता है कंधे पर. सो कृष्णा वाज टेकिंग दीज kicks of Arjun throughout for the 18 days that he was his charioteer, and following his orders just like his driver. This is renunciation. This is the highest form of renunciation, that he willingly took this position. He was not attached to his position. So Krishna proves that he is God. He gives proof, because Arjun said कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ये सब कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं. शुड आई बिलीव दैट यू आर गॉड? इफ यू आर गॉड, कैन यू शो मी योर यूनिवर्सल फॉर्म? मुझे आप जरा प्रूफ देंगे? यहां तक अर्जुन ने कह दिया कृष्ण को, मुझे प्रूफ दोगे? एंड कृष्ण सेड यस, लेकिन इन आंखों से आप देख नहीं पाओगे, आपकी तो आंखों की बहुत लिमिटेशन है, ये मटीरियलाइज है, तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ. तो पहले उन्होंने उसको दिव्य चक्षु दिया और फिर अपना विश्व रूप दिखाया. So all those people who claim today कि मैं भगवान हूँ, या मैं आपको भगवान दिखा सकता हूँ, या मैंने भगवान देखे हैं, this question can be asked. Can you show us your universal form? Can you really show us that you are the source of everything? Because Krishna displayed it to Arjun not once but many times. उसके बाद इन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में भी अपना विश्व रूप दिखाया. दुर्योधन को जब ये संधि कराने गए कि let's not do a world war, and I am the supreme, I am in charge, and they said, oh, we don't believe you. So he showed it to Bhishma Pitama. Everywhere he showed his Vishwaroop again. This is the position of God. दोबारा से उन्होंने यशोदा माता को सारा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा दिया. Though, as a small baby, as a toddler, he showed the entire universe in his mouth. यहाँ तक कि यशोदा माता खुद को भी उनके मुंह में देख पा रही थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में है. वो खुद भी अपने मुंह में खड़े हैं और मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ. उनका सिर चकरा गया. This is God. Only such a person should be submitted to as the Supreme Lord, who shows that he is in control of everything. Yeah? Hence, Ishvaraha Paramaha Krishna, Satchidanand Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karana. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So if Krishna is that one God, based on the Shastra, if we come to this conclusion that Krishna is the Supreme, then what about the other Devi Devtas? What about them? So इसके लिए हम 4 तत्वों को समझेंगे. पहले इस सृष्टि में 4 तत्व हैं. सबसे पहला तत्व है विष्णु तत्व, मतलब जो सुपर सोल है हम सबके अंदर, जो परमात्मा है, जो सुपर सोल है, ये कृष्ण, इसमें से ये अवतार निकलते हैं. विष्णु अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, ये सब विष्णु के अवतार हैं. सो एक तो ये तत्व हो गया. दूसरा तत्व है शक्ति तत्व. इनमें से राधा रानी, सीता देवी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जितने भी फीमेल फॉर्म्स हैं वो सब शक्ति तत्व में से आते हैं. दिस इज अनदर टाइप ऑफ तत्व. तीसरा तत्व है शंभु तत्व, मतलब जो लॉर्ड शिवा है.
लॉर्ड शिवा के बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो द क्रिएटर, he was responsible for creation. So he writes, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। मतलब जैसे दूध is transformed into dahi by the action of acids, yet the effect of dahi is neither the same nor different from दूध। मतलब शिव दही है, अगर विष्णु दूध है तो शिव दही है। दूध में से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो शिव इज अ सोर्स, हैज कम फ्रॉम द सोर्स ऑफ विष्णु, येट ही इज नॉट लाइक अस, ही इज नॉट as ordinary like us. So his form can be understood as curds. Kshiram yatha dadhi vikara. And then Brahmaji continues to say, Govindam adi purusham tamaham bhajami. Govind hi adi purusham, jinme se Shiv tattva aaya, Shambhu tattva. And last is the Jeev tattva. So Brahmaji, hum, aap aur hum, jivas, animals, birds, fishes, दैत्य, दानव, असुर, ये सब जीव तत्व से आते हैं। मतलब ये सब नश्वर हैं, इन सब की डेथ होती है। So these are the 4 kinds of तत्वस। ये समझने जरूरी है, शॉर्ट में बताया है कि 4 तरह के तत्व हैं इस सृष्टि में। सुपर सोल विष्णु तत्व, जिससे सारे 10 अवतार आए। All the females have come from Shakti Tattva. Shambhu Tattva is Shiva, and all the demigods, all the Devi Devatas and human beings are the Jeev Tattva. So let us see how the world is created. सबसे पहले कृष्ण हुए, he is the Adi Purush. और कृष्ण जब अपनी लीलाएं करना चाहते हैं, when he wants to interact, when he wants to create the world, have your friends, friendship, he wants to enjoy, then from his right side he creates Balaram. सबसे उनका फर्स्ट इनकारनेशन जो है, उनका जो फर्स्ट एक्सपांशन है, राइट साइड से बलराम निकलते हैं और उनकी लेफ्ट साइड से राधा रानी निकलती हैं, जो शक्ति तत्व है। और राधा रानी then goes on to expand into all these female forms of Lakshmis, Rukminis, Parvati, Saraswati, Durga, ये सब राधा रानी में से निकलते हैं। बलराम फर्दर ऑन, जैसे कृष्ण पिता है, बलराम उनके पुत्र हुए, है ना। सो बलराम और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट कि बलराम सर्व्स कृष्णा। कृष्ण इज द एंजॉयर एंड बलराम इज ऑलवेज ट्राइंग टू गिव हिम एंजॉयमेंट। सिमिलरली बलराम आगे अपने और 4 पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको VSPA, इसको चतुर्व्यूह बोलते हैं। ये 4 पुत्र कौन है? वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हाउ देवी देवताज आर मेड। सो बलराम जब व्यासदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को बनाते हैं, तो इसमें से जो शंकरशन है S, वो आगे फिर से एक्सपैंड करते हैं इनटू नारायण, नारायण और विष्णु। सो विष्णु यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्रिएट हुए बलराम के चतुर्व्यूह से। बलराम ने जब चतुर्व्यूह क्रिएट किया, उसमें से नारायण उत्पन्न हुए। नारायण वॉज क्रिएटेड, ही एक्सपैंडेड। और नारायण अब खुद आगे जाके दोबारा से एक चतुर्व्यूह खुद बनाते हैं, उनमें से, उनकी बॉडी में से ये चतुर्व्यूह दोबारा निकला। शंकरशन, वसुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर नाउ ही इज गिवन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो शंकरशन अब महाविष्णु बनकर एक कारण जल, पानी भर जाता है, वो अपने ही स्वेट से पानी क्रिएट करते हैं, एक पानी मतलब ओशन क्रिएट करते हैं और उसमें लेट जाते हैं। एंड देन ही गोज इनटू अ डीप योगिक ट्रांस, और इस दैट इज द योगिक स्लीप ऑफ क्रिएशन। एंड व्हाइल इन द डीप योगिक स्लीप ही ब्रीथ्स आउट, और उनकी जो एक्सलेशन है दैट इज मिलियंस ऑफ ईयर्स लॉन्ग। हमारी तरह जल्दी जल्दी सांस नहीं लेते, उनका इनहेलेशन इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक सांस भरते हैं, एंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो एक सांस छोड़ते हैं। और जैसे ही वो सांस छोड़ते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, करोड़ों यूनिवर्सेस बन जाती हैं। फ्रॉम हिज नॉस्ट्रिल्स दे कम आउट, फ्रॉम हिज ब्रीदिंग, फ्रॉम ऑल द पोर्स ऑफ हिज बॉडी, these various planets come out, and they are floating. They are floating in space just like swabs of cotton. इतने भारी हैं, लेकिन केवल कॉटन की तरह वो तैर रहे हैं। अभी इनमें जान नहीं आई है, अभी ये सिर्फ क्रिएट हुए हैं, महाविष्णु की ब्रीदिंग से क्रिएट हुए हैं। उसके बाद महाविष्णु
कन्वर्ट्स, ट्रांसफॉर्म्स और एक्सपैंड्स इनटू गर्भोदक्षाय विष्णु। मतलब वो गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर इन सभी प्लैनेट्स के गर्भ में चले जाते हैं और गर्भ में इनके जाते ही इनको लाइफ देते हैं। ये निर्जीव थे अभी तक, लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर जैसे ब्रह्मा जी क्रिएट हुए, ऐसे ये हर यूनिवर्स में क्रिएशन कर देते हैं। और वो सारी क्रिएशन जब सभी में लाइफ आ जाती है, सभी यूनिवर्सेस अलाइव, एक्टिव, एजिटेट हो जाती हैं, देन ही एज अ परमात्मा ही कम्स इनटू ईच एंड एवरी एटम। मतलब सृष्टि के एक एक कण में वो समा जाते हैं, मतलब पत्थर में भी, पहाड़ों में भी, नदी में भी, हर चीज में वो एज अ परमात्मा एंटर कर जाते हैं। तभी वो चीजें फंक्शन कर सकती हैं, तभी वो चीजें ग्रो, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कर सकती हैं। जब तक परमात्मा उनमें नहीं आएगा, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। सो महाविष्णु से गर्भोदक्षाय, गर्भोदक्षाय से परमात्मा, या उनको क्षीरोदक्षाय भी बोलते हैं। और ये क्षीर जब परमात्मा आ जाते हैं, आप में, मुझ में, जानवरों में, चींटियों में, पत्थरों में, हर चीज में परमात्मा आ गए, उसके बाद इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना होती है। दिस होल वर्ल्ड, पेड़ बन गए, पहाड़ बन गए, नदियां बन गई, वनस्पति बन गए, फल फूल बन गए, 84 lakhs ऑफ स्पीशीज बन गई, एक्वेटिक्स, पीस, रेप्टाइल्स, ये सब अब बने परमात्मा के एंटर होने के बाद। एंड फाइनली जब ये सृष्टि बन गई, अब इसको चलाने के लिए एक ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तब बनते हैं सारे देवी देवता। दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो यू कैन सी कि देवी देवता कब जाके बने। इट टुक दिस लॉन्ग साइकिल, कृष्ण टू बलराम, टू द फर्स्ट चतुर्व्यू of Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, Anirudh, to Narayan, to the second Chaturvyu, to Mahavishnu, to Garbhodakshay Vishnu, to Kshirodakshay Vishnu, to this material world, and finally come the Devi Devtas. ये श्रीमद् भागवतम में डिटेल में समझाया हुआ है, उसी से ये पिक्चर बनाई गई है, फ्रॉम ऑल दो श्लोकास ऑफ श्रीमद् भागवतम। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में। So it's important to understand this little technical thing to understand Devi Devtas. Now tell me, is Krishna the incarnation of Vishnu or Vishnu the incarnation of Krishna? Quickly in the chat box. Krishna is the incarnation of Vishnu or Vishnu is the incarnation of Krishna? You can unmute and say if you don't want to type. Vishnu is the incarnation. Yeah, Vishnu is the incarnation of Krishna. Vishnu is the incarnation of Krishna. Excellent. So is Krishna the incarnation or Vishnu the incarnation? Here comes the verse, Bhagavad Gita 4.7. Yada yada hi dharmasya, आप सबने ये बहुत बार सुना है, thanks to the television. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Krishna declares himself that whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, Arjun, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. मतलब मैं तब आता हूँ, ये चतुर्व्यूह रचता हूँ और तब आता हूँ जब जब धर्म का पतन होता है. People become animalistic, dog-like, just indulging in eating, sleeping, mating and defending, then I descend. तब तक मेरे देवी देवता ये काम संभालते हैं सृष्टि का. Hence, you can take a picture of this on your phones, laptops. This is how the demigods are created. So this clearly establishes that Krishnastu Bhagwan Swayam. Srimad Bhagavatam में लिखा गया है, एते चाम स्कलापम सह Krishnastu Bhagwan Swayam इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे. एते चाम्स मतलब expansions and expansions of expansions. There are millions of such expansions and expansions of expansions going on as we speak. ऐसे कितने सारे अवतार, अवतारों के अवतार हो रहे हैं, बन रहे हैं. बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं के, हे भगवान कृष्ण, ये आप ही में से शुरू हो रहे हैं. You are the source and all these expansions are coming from you. अगर कृष्ण को पिक्चर में से निकाल दिया जाए
all of them will vanish. This is the meaning of Anadar Adar Govinda. He is the starting point. Starting point को निकाल दो, पूरी line गायब हो जाएगी. Okay. So, इसको कैसे समझा जाए? Supposing, let's take Microsoft. There is a sales head Microsoft company में, finance head, marketing head, purchase head, country head, R&D head, सपोर्ट हेड. मतलब एक कंपनी को चलाने के लिए, अगर बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट है आज, घर घर में, ऑफिस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट यूज होता है, और अगर ऐसी कंपनी अगर चलानी है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए. और ये तो अगर एक कंट्री में है, तो अलग अलग कंट्री में है, तो यू विल हैव सो मेनी कंट्री हेड्स, एंड देन वन पर्सन ऑन टॉप ऑफ ऑल द कंट्री हेड्स, यू नो, रीजन वाइज. You will need so much of infrastructure to run a company. उसी तरह ये जो सृष्टि है, the administration of the universe, it's a huge universe, and Krishna is the CEO. So he needs these Devi Devtas to run this administration. So, I mean, not he doesn't need them, he has created them because he does not want to get involved. He is busy enjoying himself in Vrindavan. So who is his water minister? Indra, the rain of God. He is in charge. It is his headache to ensure that everybody gets sufficient water on time so that they can do agriculture and maintain themselves. So all the work has to be done by Indra. He is the water minister. Similarly, electricity minister कौन है? Surya, the sun god. सबके अलग अलग वाहन हैं, सबको ये पोस्ट दी गई हैं, and they all report to Krishna periodically. And whenever they get into trouble, they come to Krishna for brainstorming, for solutions. Power minister कौन है? In Krishna's company, Agni Dev. He is the power minister. Similarly, water minister कौन है? Varun. He is the water minister. Similarly, wind minister कौन है? Vayu Devta. He is the wind god. Then finance minister Lakshmi Devi. She is the cashier, most treasurer of Krishna's company. Home minister Durga Devi. She is in charge of this material world. No wonder इनकी इतनी पूजा की जाती है, इतनी सेवा की जाती है, क्योंकि she is the in charge. Home minister है वो, सारे rules and regulations यहाँ के वो बनाती हैं, इसीलिए हम लोग इनकी इतनी पूजा करते हैं, because she knows that we know that she has the power to give us whatever we want. So Durga Devi बहुत important position पे है, home minister. Defense minister Kartikeya, ये हमारे commander of chief, in chief हैं army के, of this material world. देवताओं के ये commander in chief हैं, Kartikeya. So he is the defense minister. Education minister कौन है? सरस्वती देवी, जिनकी सबको याद आती है एग्जाम से पहले या ड्यूरिंग एग्जाम्स, उसके आगे पीछे भूल जाते हैं. तो ये एजुकेशन मिनिस्टर की पदवी संभालती हैं. एंड फाइनली प्लेसमेंट मिनिस्टर यमराज. सबकी लाइफ में ये आते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं उनको कहाँ प्लेसमेंट देनी है, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क. इन्होंने कैसा काम किया अपने ऑफिस जॉब जब तक इनको मिला हुआ था, जैसा काम करेंगे उनको ये वैसे प्लैनेट में पहुंचा देंगे. रौरव, पाताल, सुताल, there are so many types of hellish planets, so many types of other higher planets. Yamraj gives you placement depending on your karmic bank balance. Construction minister कौन है? Brahma ji. He has been given the blueprint and he has the job of running this universe. He is the god of creation. So, Vanita ji, yes. can I ask you a question? Sure, go ahead. So, like you said that Krishna ji is the supreme god. Yes. He's created the entire Brahmand. Yes. And these are the administrations of Krishna ji. Yes. So, if he's created the Brahman, why does he need all the other gods? An administration. One is that. And secondly, for example, if like you said, Saraswati Devi is for Education. Mm-hmm. So say if I believe that Krishna Bhagwan is the main god, then why do I pray to Saraswati Devi? I can directly pray to Krishna ji. Yes, such an intelligent question.
Thank you for asking that, and I'm going to answer that now. Yes. That's precisely our question too. So these are frequently asked questions on Krishna and the Devi Devtas. Devi Devtas को English में demigods बोलते हैं. तो हमने वो सारे frequently asked questions यहाँ collect कर दिए हैं. Hopefully आपके सारे questions इनमें answer हो जाएंगे. अगर नहीं answer होते, chat box में लिख दीजिएगा. I will answer them at the end of this session. So what is the difference between Krishna and the demigods? दोनों की position में क्या फर्क है? First of all, Krishna is number one. एक ही है Krishna. There is just one Krishna. There are not many. लेकिन demigods जो है 33 करोड़ है. There are 33 crore Devi Devtas. This is the first difference. Second is the nature of the body. Krishna is made up of Sat, Chit, and Anand. He is eternal, full of knowledge, and blissful. He never ages. He is above everything. But the demigods have a limited time. Expiry date के साथ आते हैं सारे demigods. ब्रह्मा की जो life है 311 trillion years की है. So it's mind-boggling. But at the end of the 311 trillion years, also he dies. So all Devi Devtas have an expiry date, which is not the case with Krishna. Similarly, the next fact about them is that Krishna का क्या काम है? Just to enjoy. He does not report to anyone. उनका कोई boss नहीं है, ना उनको किसी को report करने की जरूरत है, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है. He is, because everything belongs to him, he is the supreme proprietor, enjoyer, controller. All he does is enjoy with his family, friends in Golok Vrindavan Dham. But the demigods have a task to do. They have administration work to do. So they are always on their toes and they have to report to their master at all times about their whatever they are doing. Nature of residence. Krishna resides in the eternal spiritual kingdom. That's where he resides. मतलब ये जो material world है और इसके rules और regulations से ऊपर है कृष्ण का spiritual kingdom. There no rules and regulations of this world apply. But the demigods live in heaven and heavens are subject to destruction. जैसे हम कहते हैं हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए. Swarg is not a great place to go to because that also is subject to destruction. You cannot stay there eternally. Spiritual world may you can stay eternally, not in heavens. And demigods all stay in heavens. So they are also subject to destruction. They have an expiry date. Similarly, nature of position. Krishna is the eternally supreme. Nobody can take his position. But demigods की temporary post है. For example, इंद्र की post पे आप भी जा सकते हो. आप इंद्र बन सकते हो. आपको केवल 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं. Now, even doing one अश्वमेध यज्ञ in one lifetime is very difficult to do. लेकिन अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो in many lifetimes, तो आपको इंद्र की पोस्ट मिल सकती है. उसी तरह ब्रह्मा की पोस्ट को लेने के लिए भी there are a set of तपस्यास. अगर आप वो कर लोगे, आप ब्रह्मा की पोस्ट ले सकते हो. आपको पता है कि करंटली हमारे इंद्र का क्या नाम है? पुरंदर. शास्त्र में यहां तक बताया गया है करंटली इंद्र की पोस्ट पुरंदर नामक व्यक्ति ने ली हुई है. और जो आने वाला है, जब ये इंद्र की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, द नेक्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द पोस्ट ऑफ इंद्र इज बलि महाराज. ही इज वेटिंग इन लाइन. सो जस्ट सी हाउ विथ सो मच ऑफ प्रिसिशन दिस सृष्टि का कार्यक्रम इज गोइंग ऑन. देयर इज अ पर्सन ऑन एवरी पोस्ट. और कई बार पोस्ट जब खाली होती है, कोई एलिजिबल ही नहीं होता, क्वालिफाइड ही नहीं होता वो पोजीशन लेने के लिए, कृष्ण खुद उस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए संभाल लेते हैं कि अच्छा अभी कोई बना ही नहीं इस लायक इस पोजीशन को लेने के लिए. किसी ने इतनी तपस्या ही नहीं कर पाए यहाँ तक पहुंचने के लिए. माय पॉइंट इज दैट द पोस्ट ऑफ डेमिगॉड्स इज टेम्पररी. एनीबडी, इट्स नॉट दैट एक ही इंद्र बार बार बनता है. इंद्र आदमी का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है. और अलग अलग जीवाज उस पोस्ट पे बैठते रहते हैं. So the same thing goes for Shivji also? Yes, same thing goes for, no, Shivji is, like we said, a Shambhu Tattva. So Shivji will remain Shivji only. He is the expansion of Sadashiv, of the spiritual world. But the others, yes. Motives of worship. What are the motives of worship? This is very interesting.
कृष्ण को वर्शिप करते हैं लोग प्रेम के लिए, लेकिन देवी देवताओं को वर्शिप करते हैं डिजायर्स के लिए. You will never go to Saraswati just out of love for Saraswati. You will go to her to ask for marks, to pass, or to get something. You will go to Ganesh to get something. You will go to Brahma and you will go to Durga to get something. इन सभी देवी देवताओं के पास हम याचना के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव होता है, नहीं गणेश की पूजा करनी है ये मिलेगा, हनुमान की पूजा करनी है ये मिलेगा, ब्रह्मा की पूजा करनी है ये मिलेगा. किया ना सबने. ब्रह्मा की पूजा हिरण्यकशिपु ने की क्योंकि उसको इमोर्टैलिटी चाहिए थी. शिव जी की पूजा रावण ने की बिकॉज ही वांटेड टू बिकम गॉड हिमसेल्फ. सो मटेरियल डिजायर्स की पूजा के जो इच्छुक होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो प्रेम करना चाहता है ही इज अट्रैक्टेड टू कृष्ण हु वांट्स इटर्नल लव. और ऐसी वर्शिप का फल क्या है? लेट अस सी. कृष्ण की वर्शिप अगर आप करते हो, फल इज इटर्नल. अगर आपने 1% कृष्ण की वर्शिप की इस जन्म में, that 1% will not finish after death. You will carry it forward to the next life. लेकिन देवी देवताओं की आपने जो भी पूजा की इस जन्म में, 100% भी अगर पूजा कर ली, जैसे with death that 100% becomes 0. From next life again you have to start. But with Krishna, even a 0.01% will carry forward. It is eternal because Krishna is eternal, whereas the demigods are material and temporary. And how do they take care of you? This is also very important. Krishna gives us what we need, but the demigods give us what we want. इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए. 14-15 साल का लड़का, उसने टीवी पे देख लिया कि अमिताभ बच्चन सिगरेट फूंक रहा है, उसका भी मन किया, उसने पैसे लिए, दुकानदार के पास गया सिगरेट खरीदने. दुकानदार देखेगा कि मेरे सिगरेट के जितने दाम है, इफ दिस बॉय इज एबल टू गिव मी दैट मच मनी, आई विल गिव हिम अ सिगरेट. दिस इज व्हाट द देवी देवतास डू. आप उनकी विधि विधान से सारे मंत्र पढ़िए, पूजा करिए, व्हाटएवर यू आस्क देम दे विल गिव यू. लेकिन वही बच्चा अगर वो पैसे लेकर अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी विल से नो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू माय सन, I will not give you, even though you have brought me the exact change, I will not allow you to smoke a cigarette, but I will give you an alternative so that तुम्हारा ध्यान या तुम्हारी जो क्रेविंग है वो इससे satisfy हो जाए, ताकि हम तुम्हें इसका लस्ट तुम भूल जाओ. This is what Krishna does. If you pray to him, he will not give you what is not good for you, because he can see your future, he can see your past. And as a parent, he knows what's best for you. So he will give you what you need, what is best for you right now, even if it is not giving you what you want. But Devi Devtas do not have that authority. They are bound by their karmic laws. You pray to them, they have to give you. You pray to Indra, he has to give you rain. He cannot not give you rain. He is bound by those laws. But Krishna is the parent. So बहुत नुकसान है देवी देवताओं की पूजा करने में, because you will ask them for things that may not be good for you because you can't see your future. But Krishna will guide you like a parent. और इसीलिए लोग कृष्ण की पूजा से विमुख हो जाते हैं कि वो तो देंगे नहीं, पता नहीं देंगे या कब देंगे, अरे ये तो शर्तिया इलाज है, इतने व्रत रख लो, यहाँ पे धागे बांध लो, इतना चंदा चढ़ा दो, इतने लोगों को भोजन करा दो, बिल्कुल मिल जाएगा जो मांग रहे. But it's temporary and it can be nuksandai in the long run. So you can take a picture of this. I won't go into detail. जो मैंने आपको अभी बताया, differences between worship of Krishna to demigods is given in this and you can refer to it. तो फिर हमें देवी देवताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? हाँ, जो कृष्ण के भक्त हैं वो देवी देवताओं की क्या फिर पूजा नहीं करते? करते हैं, बट कैसे करते हैं? कॉन्शियसनेस अलग है. जैसे हम पुलिस कांस्टेबल को भी रिस्पेक्ट देते हैं पुलिस कमिश्नर के साथ. जब पुलिस कमिश्नर आता है वो अपने इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स के साथ, जूनियर स्टाफ के साथ, कांस्टेबल्स के साथ आता है, सबकी इज्जत की जाती है बिकॉज वो पुलिस कांस्टेबल के साथ है. दे आर सर्वेंट्स ऑफ द पुलिस कांस्टेबल. सिमिलरली these देवी देवतास आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर ग्रेट डिवोटीज, ग्रेट भक्तास. तभी कृष्ण ने उन्हें चूज किया और उन्हें इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी उनकी सृष्टि चलाने के लिए. तो इन्हें इज्जत देनी है.
इनको वर्शिप करना है, लेकिन इनसे कुछ मांगना नहीं है। प्रेम अगर करना है, रिलेशनशिप अगर बनानी है, तो वो केवल और केवल कृष्ण से। मांगना भी है तो केवल कृष्ण से, बिकॉज एज अ पेरेंट ही इज इन अ बेस्ट पोजिशन टू गाइड यू whether what you are asking is right for you or not. So इनको इज्जत देनी चाहिए. So can anyone become God? What's the answer? Yes or no? Chat box में लिखिए. Can anyone become God? कृष्ण की पोस्ट ले सकता है कोई? No. Okay, lots of intelligent people. Can anyone become God? I don't think. Can we ever match ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यशस्य स श्रियः ज्ञानवैराग्याच्चैव सन्नाम भाग इतिंगणा? Not a chance. And thank God that this post cannot be taken by anyone. So similarly, as you can see in this picture, God is not just a light. God is a person. Because if there is light, there has to be a person behind that light. So अगर ब्रह्म ज्योति है, तो उस ब्रह्म ज्योति के पीछे एक ब्रह्म है, और वो ब्रह्मन कृष्ण है. So this understanding that everything came just from a light is not wrong, but it's incomplete. ये अधूरी पिक्चर है. The complete picture is what you can see on the right side. कैसे? जैसे इतना विशाल सागर है, और ये छोटा सा बिंदु अगर आप ले लेते हैं, और ये ड्रॉप जो है वो भी खारा ही लगेगा, और समुद्र में का आप टेस्ट करोगे वो भी खारा लगेगा, लेकिन ड्रॉप कैन नॉट डू एनीथिंग. लेकिन समुद्र जो है सुनामी ला सकता है. तो ड्रॉप अपने आप को समुद्र के बराबर नहीं कभी गिन सकता. वो उसका अंश जरूर है, उसमें वो सेम क्वालिटीज हैं जो समुद्र में है, लेकिन क्वांटिटी में जमीन आसमान का फर्क है. सो भगवान समुद्र है और हम जो उसका एक ड्रॉप है. सो ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ दैट ब्रह्म ज्योति, ऑफ दैट मैग्निफिशेंट तेज ऑफ कृष्णा's बॉडी. हम उसके एक ड्रॉप हैं, लेकिन हम उसके बराबर नहीं है. हम में वो क्वालिटीज हैं, लेकिन वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, लेकिन कृष्ण में वो क्वालिटीज इन फुल है. सो हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं. वी आर नॉट गॉड्स, बट वी आर गॉड्स. कैसे? जैसे भगवान की तरह, जैसे भगवान ने ये सब क्रिएट किया, he has this quality of creating, and he can create beautiful the whole creation. He can make planets, planetary systems. Similarly, but हम क्या कर सकते हैं? We can create a small plane that can float for a few hours, or we can create rockets or satellites. So ये creation की जो feeling है, ये भगवान से ही हमें आई है. लेकिन साइज का बहुत बड़ा फर्क है, between his creation and our creation. He creates planets which are floating permanently from time immemorial, and we can do the same thing temporarily. Similarly, we are finite, God is infinite. We are जीवात्मास, he is a paramatma. मतलब हम आत्मा है और वो हमारे ऊपर है. He is the paramatma controlling all the atmas. So we are not the creators, we are not the enjoyers. हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए और क्या है? We are co-operators. हम जो ये सृष्टि बनाने वाला है, सृष्टि का नियंता है, अगर हम उसकी सृष्टि के नियमों को फॉलो करते हुए सृष्टि में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे. लेकिन अगर हम उसके रूल्स और रेगुलेशंस को डिसरिगार्ड करके अपनी मर्जी से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, if we do not try to become a co-operator, then we are going to be very, very unhappy here. So हमें अपनी पोजीशन पहले समझनी है. We are not creators, nothing can be created by us. We are not the enjoyers here, we are sevaks. Balram ki position dekhiye, he is the first expansion of Krishna. Yet, what is his consciousness? How can I serve Krishna? Not once does he feel that, oh, I am creating the Chaturvyus, I am creating all the Vishnus, I am creating the Garbhodakshai, Shirodakshai, Mahavishnu. He does not have that consciousness. He all the time is feeling, how can I cooperate with the great plan of Krishna? How can I help Krishna enjoy? By engaging in the management of this universe. So, with this,
we come to an end. I'm glad I finished it on time, although it was very long. Any questions now after we've taken all of these sessions? Yes, so we have someone mentioned if you can elaborate on unmotivated worship. Ahaituki apratihata. Unmotivated worship is worshipping someone without expecting anything in return, and worshipping someone with full surrender, with full faith. No conditions attached. If you do this, then I will do this. That's called pure love. That's how we do. You can get some idea of ahaituki apratihata. We employ this in raising our children, isn't it? If we didn't have these two qualities, could we raise our children? No. If we had this kind of a len-den, if you behave yourself, then only I'll take care of you. If you're potty trained nicely, then only I'll take care of you. We don't. Whatever the child does, we take care of it, isn't it? But this is a process. In the next remaining last 3 sessions, we will understand how this process is executed. It is very scientific. It is not sentimental or dogmatic or vague. It's very specific, and the Shastra has explained it very nicely. So there is no need to be overly anxious on how can I achieve this state. It comes naturally by following the process of Bhakti Yoga. Okay? Ashish, do you want to ask something with regard? No, I think that answers Charmi. Thank you very much. Okay. All right. Thank you, Ashish. So any more questions? Can we have the cameras on so that we can say goodbye to each other? Hare Krishna. Hare